warm welcome to one and all. Myself, Dr. Rashmi Joshi Sawalkar, Assistant Professor, Department of Zoology, Shri RLT College of Science, Akola. Dear friends, today we are here to study the topic Ultrastructure and Functions of Mitochondria. This is the chapter from your unit 2nd of the paper semester 2. So let's see what is mitochondria and what is the ultrastructure, how is the ultrastructure and what functions are performed by this mitochondria. So let's start. This I have given you the diagram here in which I have shown that how the oxygen is taken by mitochondria and how the ATP molecules are generated. So I highlighted this main structure, that is, it is the powerhouse of the living cell. So let's see now the structures. So introduction. Mitochondria were first seen by Sawalkar in 1850 in muscles and called them sarcosomes. So in 1850 it was first invented that mitochondria are there, first seen by Sawalkar, and after that Fleming in 1882 described these organelles as philia. So the nomenclature given by Fleming in 1882 was philia. Then Altman 1890 observed these structures and named them bioblasts. Fleming named them philia, Altman named them bioblasts. Benda 1898 stained these organelles with crystal violet and renamed them mitochondria. So see the bifurcations here. First of all, in the year 1850, mitochondria was first seen by Sawalkar, and he called them as sarcosomes. Fleming called them philia. Atman called them bioblasts, and at last in 1892 Benda called them and stained them with crystal violet and called them as mitochondria. Now Michaelis in 1900 used genus green B as a vital stain to observe mitochondria in living cells. So these are all about the history and past inventions regarding mitochondria. So many MCQs are asked in competitive exams on this. So you should learn about these inventors who invented something new about mitochondria. Now let's see structure or morphology of mitochondria. The shape of mitochondria is highly variable, ranges from short rod shape to elongated filamentous form. The size of mitochondria is variable. They generally measures about 0.5 to 2 micron meter in diameter. See the measurement here, 0.5 to 2 micron meter. This is the range of diameter of mitochondria. Mitochondria have an average length of 3 to 4 micron meter. So diameter is 0.5 to 2 micron meter, and length may ranges from 3 to 4 micron meter. The number of mitochondria varies from one cell type to another. As the type of cell changes, number of mitochondria will change in that cell. So mitochondria are not found in prokaryotes. This is the major point. You should know that in prokaryotes no mitochondria are seen or not found. So this is all about the general structure or morphology of mitochondria. Now see here the diagram I have given. This is the animated diagram of mitochondria in the cell cytoplasm moving the single mitochondria. See here the inner membrane is there, cristae are there, these finger-like projections, these are cristae. This is the inner membrane, this is the outer membrane. So this type of structure, animated structure, will shown by me in this diagram. Now see the diagram here again, in which labeling is given. So see the outermost membrane. This is then elongated structure of mitochondria, in which DNA molecule, genetic material is present inside the matrix of the mitochondria. See the inner membrane, this yellow color outline is the inner membrane.
This red color outline is the outer membrane. So inner and outer membranes are found in the mitochondria, and this blue color, internal blue color structure is all about the matrix of mitochondria. So inner membrane space, the space between the two inner membrane is called as the inner membrane space. These finger like foldings or projections are called as cristae. In this matrix, ribosomes are present and some granules are seen, and DNA is also, genetic material is also present here. So, and see here the ATP synthase particles are also seen. So that's why this mitochondria generates energy. It synthesizes ATP molecules, hence it is called as powerhouse of the cell. So this is all about the ultra structure here, and this is animated diagram, so you can now understand the structure of mitochondria. Now ultra structure, let's see one by one. A mitochondria is enclosed by a double membrane envelope composed of lipid and protein. See, the mitochondria is enclosed, the double membrane I have shown you, the outer membrane and the inner membrane. So these two envelopes are composed of lipid and protein. Again, the plasma membrane is there. So plasma membrane is made up of lipids and proteins. The two membranes are separated by a narrow fluid filled space called the outer compartment. The outer and inner membranes are separated by the outer compartment. The space is called as outer compartment. The outer membrane is smooth. It is more permeable to small molecules, contains some enzymes but is poor in protein. The inner membrane surrounds a central cavity or matrix, as I have explained you in the diagram here there, that the inner membrane which shows the presence of some fluid material which is called as matrix. So it is also called as inner compartment filled with a fluid. The folds of inner wall of mitochondria are called as cristae. I have explained you in the diagram. Now see the inner membrane. This is again the animated structure I have shown you. See here, the nucleus is there in the center on which pores are seen. So those pores are nucleopores. The other projections or these cristae are of Golgi complex behind the mitochondria, and these two structures are again mitochondria. See the outermost membrane, the innermost membrane, the space between outer and inner membrane is the intermembrane space, and these folds are the cristae, and inside the cristae matrix is present, and in between the cristae the intercrystal space is seen here. So this is the animated structure again. So let's see what is inner membrane. Inner membrane is the site of the transport chain, electron transport chain, across which the proton pump occurs and contains ATP synthase. Now inner membrane is highly folded, called as cristae. The inner membrane is folded. These cristae are formed due to the foldings of the inner membrane, increasing the surface area on which the above reaction can take place. जितने ज़्यादा फोल्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इनर मेम्ब्रेन के, उतना सरफेस एरिया डेवलप होगा. सो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया डेवलप होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फंक्शन, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा. दैट्स व्हाई दीज फोल्ड्स आर फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन और दिस क्रिस्टी आर सीन. Now mitochondrial inner membrane. The inner mitochondrial membrane is compartmentalized into numerous cristae that I have explained you in the previous slide, which expand the surface area of the inner mitochondrial membrane, enhancing its ability to generate ATP. जितने ज़्यादा folds उतना ज़्यादा surface area और उतने ज़्यादा electrons वहाँ पर बाइंड होंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को वहाँ पर सरफेस एरिया मिलेगा. इन टिपिकल लिवर माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जांपल, द सरफेस एरिया इंक्लूडिंग क्रिस्टी इज अबाउट 5 times that of the outer membrane. Mitochondria of cells which have greater demand for ATP, such as muscle cells, contains more cristae than typical liver mitochondria. Yes, see here the explanation. Mitochondria of cells which have greater demand of ATP.
वो मसल सेल्स, वो लिविंग सेल्स हमारे बॉडी की जहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स, तो वहाँ पे जो भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेंगे मसल सेल्स में, उसमें इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रिस्टी मैक्सिमम रहेंगे। जितने ज़्यादा फोल्ड्स उतना ज़्यादा एटीपी का जनरेशन। सो एज कंपेयर टू लिवर सेल माइटोकॉन्ड्रिया, मसल सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में इनर फोल्ड्स ज़्यादा रहेंगे, क्रिस्टी का नंबर ज़्यादा रहेगा। सो इट इज़ द explanation regarding the folds or cristae of the mitochondrial cell. Now mitochondrial outer membrane, we have studied all about the inner membrane. Now what is the mitochondrial outer membrane? The outer mitochondrial membrane which encloses the entire organelle, this red color outline, and this is the outermost covering of mitochondria. So this is outer membrane which encloses the entire organelle, complete organelle को bind करके रखने का काम outer membrane करती है, has a protein to phospholipid ratio similar to the eukaryotic plasma membrane, that is about 1:1 by weight. It contains numerous integral proteins called porins, which contains a relative large internal channel that is permeable to all molecules of 5000 Daltons or less. Larger molecules, for example, most proteins can only traverse the outer membrane by active transport. See, as I have explained you the structure of plasma membrane in the first unit, the first chapter that I have explained you. So I have told you that in the plasma membrane some internal membrane proteins are present which functions as the gate channels or transporters. So this outermost membrane of mitochondria also consists of some proteins which helps in transportation, which helps in active transportation. So यहाँ पर वो प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट है उसको हम पोरिन्स बोलते हैं। वो पोरिन्स का फंक्शन क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स को सेल के अंदर ले जाना और कुछ पार्टिकल्स को सेल के बाहर लाना, जिसके लिए एटीपी मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी यहाँ पर ये एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से उनको मिल जाते हैं। सो दैट पोरिन्स और प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन functions as active transporters here. Now see here, mitochondria again, double membrane creates two spaces. ये जो double membrane है, again this is outer membrane, this is inner membrane. So ये दोनों membrane के बीच का space है, ये create करता है दो spaces को. First is matrix, ये जो matrix है वो, and the another is first is matrix which creates large internal spaces and intermembrane space between the membranes. So कौन सी दो membranes है यहाँ पर? So outer membrane and inner membrane जो दो spaces create करती है. So this is the structure of mitochondria regarding the inner membrane and the outer membrane here. Okay, now let's see ये matrix का फंक्शन क्या है. मैट्रिक्स यानी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है, इट इज़ कॉल्ड एज मैट्रिक्स. सो दिस लार्ज इंटरनल स्पेस कंटेन्स अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स. यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग दोज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट. अब ये उसके बायोकेमिकल प्रोसेसेस है जो इस एंजाइम्स के थ्रू, इसके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है उसके थ्रू जो होता है, वो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो उसके फंक्शंस से रिलेटेड है. नाउ द सेकेंड इज इनर मेम्ब्रेन. द इनर मेम्ब्रेन विच इज शोन इन रेड कलर is folded into numerous cristae. These folds are all due to the inner membrane structure. The three types of functions, और ये inner membrane है वो कौन से तीन functions perform करती है? Let's see. Those that carry out the oxidation reaction of the electron transport chain. Number 2, the ATP synthesis that makes ATP in the matrix. Number 3, transport proteins that allow the passage of metabolites into and out of the matrix. जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. सो अगेन दोज प्रोटीन्स आर फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑल्सो. एटीपी का सिंथेसिस करना और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
का पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस यहाँ पर होता है। ये 3 मेन फंक्शंस जो है ये इनर मेम्ब्रेन की वजह से होते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन? बिकॉज इट कंटेन्स अ लार्ज चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स। ये भी मैंने आपको पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर पोरिन्स, द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ दिस आउटर मेम्ब्रेन, those proteins are called as porins. The outer membrane is permeable to all molecules of 50,000 daltons or less, जिनकी साइज जो सोल्यूट पार्टिकल्स की साइज 5,000 डाल्टन्स से कम है, ऐसे जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उसकी परमिएबिलिटी इन पोरिन्स के थ्रू होती है। Other proteins in this membrane include enzymes involved in mitochondrial lipid synthesis and enzymes that converts lipid substrates into form. ये main functions यहाँ पर outer membrane perform करती हैं। Then intermembrane space, दोनों membrane के बीच की space, ये white color की जो outline है, it is the intermembrane space. वो क्या function perform करती है? This space that is in white color contains several enzymes that use the ATP passing out of the matrix to फॉस्फोराइलेट अदर न्यूक्लियोटाइड्स। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं उस मॉलिक्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर रिलीज करने का काम ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस करती है। सो दीज आर ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ mitochondria, inner membrane functions, outer membrane functions and intermembrane space functions. Now let's see the chemical composition of mitochondria. Mitochondria consist of proteins 70% and lipids 25 to 30%. So 70:30 का रेशो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन और लिपिड को लेकर। देन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स 0.5% ऑफ RNA एंड ट्रेसेस ऑफ DNA, द जेनेटिक मटेरियल। ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनल ऐसा है माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जिसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और यूनिवर्सल ट्रुथ है जो आपको मालूम होना चाहिए कि one and the single only one organelle, that is mitochondria, which consists of is its own genetic material. So वो कितना होता है? तो 0.5% of RNA and traces of DNA are present in mitochondria. Then mitochondrial DNA comprises about 1% of total cell DNA. एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर उसका कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल होता है। सो जितना भी जेनेटिक मटेरियल उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसका 1% जेनेटिक मटेरियल उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। सो ये रेशो ध्यान रखो 1:100 का, कि अगर 100 DNA और जेनेटिक मटेरियल 100% न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, सो उसी सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 1% ऑफ DNA इज़ फाउंड। So mitochondria contains enzymes for oxidation, phosphorylation and electron transfer, और यही function जो है वो ATP का generation करता है। So this is all about the chemical composition of mitochondria. Now the main functions of mitochondria. Mitochondria produce most of a cell's ATP, acetyl groups in the Krebs cycle producing CO2 and NADH molecule. यहाँ पे ATP का synthesis करना ये main function है। Then in NADH donates the electron to the electron transport chain and becomes oxidized to NAD positive. Now electron transfer promotes proton pump and ATP synthesis in process called oxidative phosphorylation. जहाँ पर ATP के synthesis होता है, that process is called as oxidative phosphorylation, which is performed by these cell organelle mitochondria. Cells that require large amounts of energy, such as the heart, have large number of mitochondria. As I have explained you before, that in every organ or in that organ where maximum energy is required, in that cell number of mitochondria can be seen in maximum number. सो जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ऐसे सेल ऑर्गेनेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हमको मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ATP की ज़रूरत है और माइटोकॉन्ड्रिया ATP का सिंथेसिस करते हैं। सो ये रेशो हमेशा ध्यान रखना है। देन फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स देयर ओन कॉपीज ऑफ DNA। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है पहले इस पॉइंट को, दैट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ DNA
एंड RNA along with ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सिस्टम, यानी राइबोसोम्स के थ्रू वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सिस्टम भी होता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू रीजनरेट देमसेल्व्स, ये एक रीजनरेशन प्रॉपर्टी भी उनमें होती है. सी, माइटोकॉन्ड्रिया के यूनिवर्सल ट्रूथ और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस, फर्स्ट उनमें उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, सेकेंड वहाँ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है, एंड द थर्ड पॉइंट दैट दे रीजनरेट देमसेल्व्स, यानी अगर वहाँ पर उनका पार्ट कहीं पे डिस्ट्रॉय हुआ है तो वो पार्ट को वो फिर से जनरेट कर सकते हैं. रीजनरेशन प्रोसेस वहाँ पे हमको मिलती है विदाउट द होल सेल अंडरगोइंग डिवीजन, पूरे सेल का डिवीजन न होते हुए भी वहाँ पे रीजनरेशन का काम होता है. शेप एंड साइज डिपेंड्स ऑन व्हाट द सेल्स फंक्शन इज. So these are the important functions of mitochondria, and we have studied now the ultrastructure, different parts of mitochondria. I have explained you through different animated diagrams also, and the functions I think you all are now very much clear that what are mitochondria and what are the important functions performed by mitochondria. So friends, thank you for listening me patiently, and if any query you found, please ask me or message me on our WhatsApp group. Thank you. Thank you.